Hello children, good morning. Welcome in today's science class. Children, what we will do today? Today we will continue the lesson number 12, the earth and its neighbor. We have learned many things, we have done the activity. Today we will do the notebook work, that is the long question answer. Let's revise in a short that what we have learned. What is earth, beta? The earth is a planet on which we live. And what is planet? Planets are the heavenly bodies that move around the sun. We have learned, and what these planets and sun are together called? Solar system. The sun and the 8 planets revolving around the sun are called our solar system. And we have learned about the in detail about the earth. The earth is filled with air and water. That's why there is a life on earth, because there is air and water. For living, air and water is necessary, na? And children, let's read about the movement of the earth. Okay, what is the movement of the earth? The earth moves by two ways. First is it's rotate around its own axis. एक imaginary line के चारों ओर जो अब घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? Rotation. And another type of movement in which the earth moves around the sun. और ऐसे घूमते घूमते ये सन का भी जब पूरा चक्कर एक लगा लेती है, this is called revolution. Due to the rotation of the earth, it causes day and night. Or due to the rotation of the earth causes day and night. And due to the revolution of the earth, there is change in season. Children, I am sharing the PDF where you will find the book pages. Let's read in detail. What is orbit? Orbit क्या होता है बेटा? The fixed path in which planets move. Planets जिसको move करते हैं एक path होता है ना, imaginary line, वो क्या कहलाता है? That is orbit. We have learned these things in very detail in our previous class. And what is moon? Moon is a heavenly objects that move around a planet as the planets move around the sun. The moon is the heavenly object that moves around a planet. Earth is a planet, na? And moon moves around the earth. And what is the axis of the earth? An imaginary line about which the earth rotates is called axis. Okay, children, I have some picture. I want to show you that also. I can show you. Yes, this is the axis. This is the axis. This is the imaginary line passes from North Pole to South Pole, around which this earth moves. And this type of movement of earth is called rotation. What is this type of movement is called? Rotation. Okay. And due to the rotation, there is formation of day and night. During this movement, the part of the earth which faces the sun, जो सन रेज आ रही है वो क्या वहां पे क्या होता है? डे होता है. And the countries which are at the back side of the earth, they did not get the sunlight, there are night. Okay. And children, there are another type of movement that is called revolution. In this picture, you can see the movement revolution. Here is the sun and this is the earth. The earth is moving around the sun. You can see in this picture, it is moving around the sun. And how much time it takes in this movement? It takes 365 days and 6 hours. And what causes it? It causes change in season on earth. इस तरीके की मूवमेंट की वजह से ही हमारे अर्थ पे विंटर, समर, स्प्रिंग, these type of seasons are coming. And the area which is coming directly to the earth, the countries in that areas have summer, and the countries or the area which are opposite to this, there are winters. Just like that, as the earth is tilted, अर्थ क्या है? थोड़ा सा tilted है, झुकी हुई है. Due to this, there is change in season. Okay, we have learned in very detail about this thing, na? And what is constellation? Constellation is a group of stars that forms a shape in sky.
आप जब रात में स्काई पे देखते हो तो आपको क्या दिखता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखते हैं दैट फॉर्म अ स्पेशल पैटर्न, और जो एक पैटर्न बना लेते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं, जिनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. You can see here a constellation is a group of stars that forms a shape in the sky. The shape may look like an animal. एक animal के जैसा भी कभी ये shape दिखता है. It looks like an object also. There are 88 constellation known so far. अभी तक जो एस्ट्रोनॉट ने खोज की हमारे साइंटिस्ट ने, there are total 88 constellation है. Dipper and Orion are the two well-known constellation. This is the picture of Orion, and I will show you the picture of Dipper also. I have this is the picture of Big Dipper. This is the pattern they are making. You can see in the sky very easily. This common, ये ऐसे 4 दिखते हैं और इनकी एक ऐसे छोटी सी टेल जैसी बनी हुई दिखती है. This is Big Dipper, and this is the Orion. Big Dipper is a group of 7 stars that look like a long handle spoon. ये कैसा दिखता है? लॉन्ग हैंडल स्पून की तरह. ये देखो, ये स्पून का आगे वाला हिस्सा और ये स्पून की हैंडल, ये बिग डिपर. ये और टुडे आज आप सब लोग स्काई में शाम को देखिएगा, नाइट में, एट द नाइट यू विल सी दिस बिग डिपर. ओके, एंड द Orion looks like a hunter. ये एक हंटर की तरह बिल्कुल दिखता है. इट हैज 7 ब्राइट स्टार्स एंड 7 फेंट स्टार. टोटल 14 स्टार होते हैं. 7 बहुत चमकते हैं और 7 थोड़े कम चमकते हैं. ओके, चलो. Yes, this is the constellation. And we have learned that the solar system consists of sun and all the objects that move around it. सन के चारों ओर जितनी भी चीजें घूमती हैं, planets, moon और asteroid, there are many small objects that move. They all made the solar system. Planets are large round object that moves around the sun in a fixed path, and these paths are known as orbits. And we have total 8 planets. ठीक है, वो क्या है? From the sun, sun से सबसे पास क्या है? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets. Like the Earth, some other planets also have their own moons. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किसी के ज्यादा मून होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं. We have learned in very detail. The movement of the Earth on its axis is called rotation, and the movement of the Earth around the sun is called revolution. और डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. और सीजन्स किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द revolution of the earth. We all have learned these things in very detail. And children, we have done the book exercises, we have done the short question answer, defined words we have written earlier. What we will do today? Today we will do the children notebook work. We have done the book exercises, defined word, short question answer, and today we will do the notebook work. I will share the PDF of this question answer in the next app, but just now I am going to explain those questions I will share, and I will share the answers. Questions are in your book, but I will share the answers. And it is in your book on page number, it is 113. Page number 113, you will get these question answer, and you have to draw some pictures. Some of you have done already, and today I will tell about others picture which you have to draw. And these are the total notebook work. Okay, children, let me read the question one by one. You just listen these very carefully and try to understand. Then you will able to write this. Okay, children. Okay, from the new page you will start and write the answers these questions. These are the long question answers, and short question answer we have already done. Define we have already done. This is the today's work. Okay. Yes, this is the question answer. It is in your book on page number 113. What the question? You will start from the new page. कहाँ से शुरू करेंगे? New page से शुरू करेंगे. What a question number 1? You will write this heading, long question answer, or answer these question. Anyone you can write. And question 1. What you will write here? Question number 1. What is the difference between a planet and a moon? Yes, these are the answer. A planet moves around the sun in a fixed path.
ठीक है, दिस इज द प्लैनेट है, क्या होता है जो कि सन के चारों ओर फिक्स पाथ में घूमता है, एंड आवर अर्थ इज अ प्लैनेट. And a moon is a heavenly object that moves around a planet. Planet के चारों ओर मून घूमता है, but planets क्या होते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं. This is the difference. And our earth has only one moon, है ना? And come to the another one. The question number 2. What is the solar system? Name the planets in the solar system starting with the one closest to the sun. Children, you have made solar system. If you have not made, then you make the solar system in front of this question. Many of you have made in the front of the defined word solar system banaya hai na? That is very good. If you have not made, then you can make in front of this question also. ठीक है, यहाँ पे भी आप बना सकते हो. You have to make only one time the solar system. What is solar system? The question was, what is the solar system? Name the planets of the solar system starting with the one closest to the sun. Answer number 2. The solar system consists of the sun and all the objects that move around it. जो सारी चीजें जो सन के चारों ओर घूमती वो मिलके सोलर सिस्टम बनाती हैं. The 8 large round objects that move around the sun are called planets. ये क्या कहलाते हैं? Planets. The order of the 8 planets starting from the one that is closest to the sun is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. You have to write these names. Children, as I want to show you the picture in your book. Okay, in your book it is, this is on page, this is the picture of the solar system. Now, this is the picture of the solar system. Here is the sun. यहाँ आप देख रहे हो ये सन की पिक्चर है, हाफ सन दिख रहा है, अराउंड द सन ऑर्बिट में ये सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. ओके, and I have shared one picture of solar system also. Now you can draw the solar system. Okay children, let's do the another question answer. Okay, the next question is, what are inner planets? Inner planets क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, the 4 planets जो inside होते हैं, जिन पे surface है, जिस पे life होती है, they are called inner planets. Yes, the first 4 planets are called the inner planets. These have solid surfaces. इनके surface कैसे होते हैं? Solid हैं. And what are the name of these planets? Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Venus, Earth and Mars. These are the inner planets. Okay. Let's read the next question. Describe the structure of the Earth. अर्थ के स्ट्रक्चर को आप बताइए. ओके, यस, द अर्थ इज सराउंडेड बाय, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी अर्थ चारों ओर एक गैस के लेयर से है ना, एयर है ना, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. वाटर एंड लैंड आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो सबसे बाहरी लेयर होता है अर्थ का, उस पे क्या होता है? वाटर एंड एयर प्रेजेंट होता है. और दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट. ये पार्ट क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है. इट इज द लेयर वी लीव ऑन, जिसपे कि हम लोग रहते हैं. बिलो द क्रस्ट देयर इज अ लेयर ऑफ मोल्टन रॉक दैट इज कॉल्ड mantle. And the innermost layer is called the core. It is made up of hot molten metals. And this is the hottest layer of the earth. ये सबसे ज्यादा गर्म जो है लेयर होता है. I want to show you the picture of the, ये देखो, this is the layers of the earth. You have to draw this diagram also. आप ये वाला डायग्राम भी बनाओगे. हाँ, ये देखो, this is the outermost layer of the earth. ये सबसे ऊपर का लेयर है, वो क्या कहलाता है? दिस इज क्रस्ट. ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला एरिया क्या है? क्रस्ट है. एंड द क्रस्ट पे क्या होता है? एयर
एंड वाटर एंड लैंड। ठीक है, एयर वाटर एंड लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द आउटर एरिया, जहां पर कि हम लोग जिंदा हैं, हम लोग रहते हैं। और उसके बाद में कौन सा ये लेयर होता है? सेकेंड लेयर ये कौन सा है? जो सेकेंड बीच वाला लेयर है, मैंट लेयर है। हाँ? और सबसे अंदर में जो मोल्टन रॉक्स हैं, बिल्कुल मेटल्स गले हुए हैं और सबसे हॉट है, दैट इज कॉल्ड कोर। ओके चिल्ड्रन, this is the answer of this question, and you will draw this diagram also. Okay, the layers of earth you will draw. अब कौन सा पिक्चर बनाओगे? The layers of earth का पिक्चर in front of the question number 4. ठीक है, and come to the question, another question, the last one. ठीक है, हाउ आर सीजन्स फॉर्म? सीजन कैसे बनते हैं? हमने आपको बताया था ना, हाउ आर द सीजन फॉर्म्स? सीजन दिस ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है और थोड़ी सी टिल्टेड होती है, इसकी पोजीशन जो चेंज हुई, इसकी वजह से देयर इज चेंज इन सीजन होता है। बेटा बताया था ना हमने। यस, this is the answer. Seasons are formed due to the revolution of the earth and its tilt on its axis. रेवोल्यूशन की वजह से, और ये अपने एक्सिस की ओर झुका हुआ है। ये जब ये झुका वाला एरिया सन के सामने होता है तो वहां पे समर्स हो जाते हैं, और जब ये टिल्टेड वाला समर हो जाएगा, हॉट गैस सनरेज ज्यादा पड़ेंगी, और जो कंट्रीज जो बैक में गई वहां पे विंटर्स हो जाएगा। Because of the tilt of the earth axis, when one hemisphere faces toward the sun, जब एक हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका होता है, the other hemisphere is farther from the sun, तो सेम टाइम में दूसरा हेमिस्फेयर क्या होता है? सन से दूर चला जाता है। So one hemisphere gets more sunlight than the other hemisphere, तो जो हेमिस्फेयर सन की ओर झुका हुआ है, सन के पास है, वहां ज्यादा सनलाइट होती है। For example, when the northern hemisphere is tilted toward the sun, it gets more sunlight and has summer. At the same time, the southern hemisphere is farther from the sun, और वहां पे winter होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये झुके होते हैं उसके बेसिस पे इस पे होता है। ये देख रहे हो आप, जब ये सन की ओर ज्यादा झुका हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये झुका हुआ है, तो जो एरिया सामने आता है वहां पर क्या हो जाता है? समर्स हो जाती है, और उसके बैक वाले जो अनदर हेमिस्फेयर है जो कि दूर है उससे, वहां पर क्या हो जाता है? समर हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस मूवमेंट, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मूवमेंट दिस हैपन, चेंज इन सीजन होता है। And this children, and these are the diagrams which you have to draw. आपको रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड द और कौन सा डायग्राम? द रोटेटिंग अर्थ, ये जो रोटेशन ऑफ द अर्थ का डायग्राम ये वाला है, दैट और फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट तो हम लोगों ने ये वाला बनाया ही। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। और इसके बाद जो आप कर रहे हो वो आपका डायग्राम चला जा रहा है रोटेटिंग अर्थ का, लेयर ऑफ द अर्थ का। And children, in the front of this question, seasons are formed due to the revolution of the earth. You can draw the picture of revolution also. आप यहाँ पे यदि ये वाला पिक्चर ड्रॉ कर दोगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा क्लियर होगा आपको, you can understand easily. And children, जो डिफरेंट ये प्लैनेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम लेते हैं एक पूरा मूवमेंट करने में सन का। जैसे सैटर्न है, सैटर्न पता कितना टाइम लेता है? इट टेक्स 30 ईयर टू मूव, अपने पूरा ऑर्बिट में घूम के आने में। अर्थ का क्या है, सब जानते हो, 365 डेज लेती है। और जुपिटर को पूरा मूव करने में कितना टाइम लगता है? 12 ईयर्स। अब मार्स को मूव करने में कितना टाइम लगता है? 687 डेज। दिस इज नॉट इन योर बुक, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको और इसके बारे में बताने के लिए आई एम शेयरिंग दिस इज फ्रॉम द अनदर बुक। अब मरकरी को कितना टाइम लगता है एक मूवमेंट करने में सन का? 88 डेज, वन रेवोल्यूशन में। और नेपच्यून को 165 डेज। देख रहे हो, नेपच्यून 165, अर्थ 365। एंड
वेनस को 225 days एंड यूरेनस को तो कितना टाइम लगता है, 84 years लगता है पूरा एक रेवोल्यूशन में. Okay, children. Now I hope you will be able to write this question answer on the Edunex app. In the lesson document chapter, you will get this question answer. I will share the PDF of this question answer and you will draw the diagram. All diagrams are present in your book. आपके बुक में ये सब डायग्राम्स बने हुए हैं. यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर. यहाँ से आप लेके ये सब देखो, सब बने हुए हैं on the page number 108. These are the diagram layer of earth का and I will share the diagrams which I have told you today. मैंने जो आज आप लोगों को बताया है, you can make from there also. Okay children, bye bye. Meet you soon in the next class and you all complete your work. What is today's work? You will read whatever I have taught to you. After that, you will complete the question answer. And in next class, we will do the other things of the lesson. Think and answer is left na, abhi bacha hua hai, and we will do a very short revision also in the next class. Okay, children. Bye bye. Meet you soon in the next class. Okay, bye.